class, we have started with. Okay, so the recording has started, and now you can put your attendance in the chat box. Everyone, please do it quickly so that we can move forward. Okay, so if my voice breaks in between, please let me know by turning on your mic. Okay, all right. So yeah. So, students, we have started chapter number 5 in the last class, and we have seen some basics from this chapter, right? And also, we have seen few examples as well. Most of the examples were solved by you, since I did not had whiteboard like usual, right? So you have solved many examples, and I think. Yeah, we were to discuss about elimination method, right? If I'm not wrong, this was the method that we were learning, right? So anyone has any doubt, like okay, so before we jump on to our today's topic, what I will do is I will ask you few questions. You can answer those questions by either turning on your mic, or you can simply put it in the chat box. Okay, so now let us suppose I have one linear equation. Okay, I have one linear equation in one variable. So in order to solve that equation, so what is means by solving that equation? Solving that equation means कि उसमें जो वेरिएबल है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया है, इट मे बी एक्स वाई जी ए बी सी पी क्यू आर वॉट एवर इट इज, राइट? सो उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, व्हाट इज फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू, सो उसे हम सॉल्व करना बोलते हैं, राइट? सो इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और मेरे पास एक ही इक्वेशन है, सो आई कैन गेट द फिक्स्ड वैल्यू, मतलब उस वेरिएबल की मुझे एक फिक्स वैल्यू मिलेगी. वी हैव सीन दैट. Now let us suppose I have one equation in two variables. Remember, I repeat my words. We have one equation in two variables. Let us suppose x and y. So can I solve that equation and can I get the values of x and y, like fixed values of x and y? Is that possible? Is that possible, students? Yes, no, maybe. You don't have any idea or something like that. No, no, Ayush, no, we cannot do that. Okay, so let us suppose अभी मैंने आपको क्या बोल, yeah, no is the correct answer. We cannot get exact values of those equations. So let us suppose I give you one equation. The equation is x plus y is equals to 10. X plus y is equals to 10. ये equation है. This is one equation and it is in two variables, right? So if I ask you what are the values of x and y, सो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू हो सकती है 9, वाई की हो सकती है 1, एक्स में बी 2, वाई में बी 8, एक्स में बी 3, वाई में बी 7, एंड वाइस वर्सा. मतलब वी डू नॉट हैव फिक्स वैल्यूज, राइट? सो अभी मान लीजिए कि मेरे पास दो इक्वेशंस है. आई हैव टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो इन दिस केस कैन आई गेट फिक्स्ड वैल्यूज और एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? Is it possible, students? I have two equations now, different equations, two different equations. I repeat that. मतलब सिर्फ दो इक्वेशन होना मतलब इनफ नहीं है. Those two equations should be different. Those should not be equal, right? So in this case, can I get exact values of x and y? अगर नहीं समझ रहा है, so I will just turn on the whiteboard. Just a moment. Sorry for this interruption. Okay, so students, think about it and try to answer it. Okay, still then I will open the whiteboard. Yeah. Okay, wait just a second. Okay, any answers? No answers? अगर मेरे पास दो इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, सो कैन वी गेट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस कौन से सी फर्स्ट इक्वेशन आई हैव इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ये एक इक्वेशन है मेरे पास. और मेरे पास दूसरा इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5. यू गेट दिस? अभी इन दिस केस ये दो इक्वेशन है. दिस इज फर्स्ट वन
दिस इज सेकेंड वन. तो इस केस में मुझे x और y की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है क्या स्टूडेंट्स? माय क्वेश्चन इज दिस, यस और नो? कैन आई गेट एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ these x and y? Yes, no, we have discussed this. You remember this or no? My voice is audible? Hello? Okay, my screen was vertical, now it is horizontal, is it? Yes, my screen is now clearly visible, na? Okay, great. So tell me, is it possible? I hope it is possible. Now see how we can do that. So elimination method से हम क्या करते हैं? By using elimination method, we can like see अभी ये दो इक्वेशंस में सॉल्व करने हैं ना. So मैं इन दो इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दूंगा. So ऐड करने के बाद में क्या है? ये पॉजिटिव y नेगेटिव y कैंसल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 2x, राइट? 2x इज इक्वल्स टू 15. अभी 2x इज इक्वल्स टू 15 हुआ. ओके, सॉरी, ठीक है. सो 2x इज इक्वल्स टू 15 हुआ. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज 2x इज इक्वल्स टू 15 है. सो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? x की वैल्यू आएगी 7.5 आएगी. सो हमारा पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 था. तो अभी x की वैल्यू है 7.5 एंड y की वैल्यू कुछ तो रहेगी और दोनों को मिला के क्या बनेगा? 10 बनेगा. सो टेल मी द वैल्यू ऑफ y. अभी y की वैल्यू क्या है? 7.5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x है. सॉरी, 10x नहीं है यहाँ पे. दिस इज नॉट x. ओके, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नाउ हियर? Vedant, I hope my screen is horizontal only and there should not be any issue at your side, right? Students, किसी को कोई issue है? Because this is the best view. ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे अभी if I hold mobile like this, so you will see a very less area या फिर ऐसा vertical दिखेगा, right? लेकिन मैं अभी horizontal पकड़ता हूँ तो it will be very comfortable for you to watch. I hope my screen is correctly. Yes, sir. But the whiteboard is becoming vertical. Okay, okay. So the whiteboard is becoming vertical. All right. So is that the issue? Okay. Okay, okay. All right. So yeah, fine, fine. So you can tell me that. ठीक है. So I should write like this ना कि मतलब अभी x plus y is equals to 10, right? This is 10. So इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो तुम्हें सही से दिखाई देगा, right? सॉरी, माय बैड. ओके, सो यू शुड हैव टोल्ड मी. बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे बताना चाहिए था. नो प्रॉब्लम, ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर विथ आवर चैप्टर. सो उसमें हमने क्या देखा? एलिमिनेशन मेथड देखा. सो एलिमिनेशन मेथड इज व्हाट? एलिमिनेशन मेथड में हम जो हमारे पास दो वेरिएबल्स है ना, सो इन दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं और जो बचा हुआ वेरिएबल है उसकी मदद पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट वेरिएबल वी फाइंड आउट सेकंड वेरिएबल. ओके, सो अभी देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अभी हमें पता कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? इसका जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं? सो द जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variables is ax plus by plus c is equals to 0, where a, b, c are real numbers and a and b are non-zero at the same time. So अभी इस लाइन को हमें बहुत अच्छे से समझना है. Okay, so in this equation the index of both variables is 1, hence it is linear equation. तो see पहली लाइन क्या है कि सबसे पहले तो हमें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है. सो अभी मान लीजिए कि यही मेरे पास एक इक्वेशन है. ओके, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं लाइक x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो ये मैंने किस तरीके से लिखा? सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0.
जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है। सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हमें लिखना है, राइट। सो अभी आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स। सो इन दिस इक्वेशन जो हमने एक एग्जांपल लिया है ये वाला, सो इसमें ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो बताओ जरा, चैट बॉक्स में बताना, कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। सी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट दीज वैल्यूज। सो ए बी सी की वैल्यूज मुझे बताओ। एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 को अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में, तो ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो बताना जरा ए बी सी की वैल्यूज। आई एम रिटर्निंग बैक टू द चैट बॉक्स, nobody is giving answers, what is the issue? What is the value of a b c? You cannot compare. See students, the fact is like, see, अभी हमें क्या करना है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ में कंपेयर करना है, राइट। सो सी, इफ इन दिस इक्वेशन coefficient of x is 1, right? So we can compare this below equation with this equation and we have value of a is equals to 1, right? Now for similarly for y we have coefficient as 1. अभी c की वैल्यू तुम बताना, a is 1, b is 1. Now what can be the value of c? Can you please tell? See, compare these two equations, the first equation and second equation, this one and this one. You will easily get the value. No, it is not 10. It is not 10. Sign is wrong. It should be minus 10. It should be minus 10. See, हमारा जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस सी है ना, तो प्लस सी मतलब यहाँ पे हमें प्लस कुछ वेरिएबल चाहिए। सो व्हाट इज दैट वेरिएबल और व्हाट इज दैट कांस्टेंट? इट इज minus 10, not only 10. I hope you get this. Clear? What is value of C? Students, what is value of C? Okay, only Ayush has answered. What about others? Yeah, it is minus 10. Okay. Okay, so let's move further. Okay, so in this equations, the index of both the variables is 1, hence it is a linear equation. So we know that, right? So if it like the index is 2, then this equation will be called what? अगर इसका index 2 रहेगा, मतलब x raised to 2 है या फिर x square है, so that equation will become which equation? I think we have seen that. हमने सीखा है, I think पिछले चैप्टर में, अगर इंडेक्स 1 रहता है तो दैट इज लीनियर इक्वेशन, अगर इंडेक्स 2 रहता है तो दैट इज विच इक्वेशन? नो, इट इज नॉट लीनियर। लीनियर तो तभी रहेगा ना जब इंडेक्स 1 रहेगा। सो इफ इंडेक्स इज 2, in that case it will be a quadratic equation, right? You remember that it would be quadratic equation. And if the index is 3, then वो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा? Cubic equation. Very good. So it would be called cubic equation. Okay, fine. So see, now we have two equations solved problems here. So we'll see that. Solve the following equation. So 3x plus y is equals to 5 and 2x plus 3y is equals to 1. So to see, solution is what? To eliminate one of the variable, we observe that in both equations, not a single coefficient is equal or opposite number. Hence, we will make one of them equal. तो देखो यहाँ पे हमें पिछले एग्जांपल में क्या देखा था कि x plus y is equals to 10 था, x minus y is equals to 5 था। तो यहाँ पे क्या होता था कि हम अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दे तो सो पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y कैंसिल आउट हो जाते थे, राइट। लेकिन अभी जो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, सो दीज टू इक्वेशंस, सी 3x plus y is equals to 5 and 2x plus 3y is equals to 1. सो इन दो इक्वेशंस में ऐसे कोई भी ऑपोजिट वेरिएबल्स नहीं, लाइक पॉजिटिव y नेगेटिव y नहीं है, या फिर
2y नहीं है। सो यहाँ पे 3x है, दूसरे इक्वेशन में 2x है, पहले में 1y है या फिर ओनली y है, एंड सेकंड में क्या है 3y है। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक आइदर ऑफ दीज वेरिएबल्स इक्वल, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक वेरिएबल हमें इक्वल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल write these two equations on the whiteboard, and then we will try to uh, equalize the variables. Okay, so first equation is 3x plus y is equals to 5. 3x plus y is equals to 5. This is our first equation. Second equation is 2x plus 3y is equals to 1. 2x plus 3y is equals to 1. Now देखो कौन सा वेरिएबल हमें इक्वल करना मतलब थोड़ा सा आसान जाएगा, राइट। सो वी कैन लाइक वी कैन इक्वलाइज एक्स अल्सो और वाई अल्सो, लेकिन इसमें से सिंपल हमें कौन सा जाएगा उस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। ओके, सो नाउ कंसिडर इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 3, मतलब अगर पहले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन 3x multiplied by 3 is 9x, 3y multiplied by 3 is 3y, and 5 multiplied by 3 is 15. So this is the third equation I have. So अभी तक किस किस को समझ में नहीं आया, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। मैंने वेरिएबल को या फिर जो वेरिएबल की टर्म है उसे इक्वल कर लिया, राइट, जो सेकंड टर्म थी ना y वाली, या यू गेट दिस। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, यू गेट दिस, ग्रेट, फाइन। सो नाउ व्हाट, अभी यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y, सो व्हाट वी डू, सो इन दिस केस वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड वन और सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वन, मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, सो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ओके, सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, then in subtraction we have to change signs of these equations. Okay, so I hope you remember this, मतलब ये जो पॉजिटिव 9x है उसे हम बेसिकली नेगेटिव 9x कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव 3y को नेगेटिव 3y कंसिडर करेंगे, एंड माइनस सॉरी पॉजिटिव 15 को नेगेटिव 15 कंसिडर करेंगे, राइट। सो सी, अभी -9x प्लस 2x, तो ये क्या होगा, -7x। Okay, and this positive 3y, negative 3y will get cancelled. Now, -15 plus 1 is -14. So, -7x is equals to -14. Then value of x is going to be how much? Tell me. -7x is equals to, अगर -14 है, so 7 sorry x की वैल्यू क्या होगी? Tell me. It would be 2, एग्जैक्टली 2 रहेगी या फिर -2 रहेगी। किसी को कंफ्यूजन है कि इट इज +2 एंड नॉट -2? किसी को कंफ्यूजन? फटाफट आंसर दो स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम टुडे। ओके, वी डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी एट आवर प्लेस राइट नाउ, एंड we do not have electricity at our place right now, and we may have to wrap up our class in 30 minutes itself. Okay, we will not be extending our class for 1 hour or 45 minutes. So it will be positive, yeah, obviously it will be positive, correct, yeah. So value of x is 2, great। now अभी क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में या फिर सेकंड वाले में या फिर थर्ड वाले में, इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। गेट इट? पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। टेल मी द वैल्यू ऑफ y। टेल मी द वैल्यू ऑफ y। Sir, can you show the sum? Okay, sure. I will show you some. See, here it is. Please see the sum and tell me the value of y.
Sorry, I'm just changing it. Okay, you can see the sum. Okay, students, did you get the answer? No, it is not 1. It is minus 1. It is negative 1. Vedant, पॉजिटिव 1 नहीं आएगा, नेगेटिव 1 आएगा. सी, अगर यहाँ पे x की जगह पे हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 इंटू 2 इज 6. सो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है. तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 आएगा, राइट? y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 5 माइनस 6. तो y इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए स्टूडेंट? y इज इक्वल्स टू आना चाहिए -1. आई होप यू गेट दिस. ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1. So now we'll see whether our answer is correct or wrong. See, all the steps that we have followed, these are exactly given here. लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या किया है किसी, we have interchanged one step but still we have got the same answer. ठीक है, मतलब हमने क्या किया था कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ना 2x plus 3y is equals to 1 वाला, तो उसमें से ये 9x plus 3y is equals to 15 को माइनस किया था. लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9x plus 3y is equals to 15 से 2x plus 3y is equals to 1 को सब्ट्रैक्ट किया. लेकिन इन दिस केस ऑल्सो x is equals to 2 ही आया. मतलब क्या सीखने को मिलता है हमें? इवन इफ वी चेंज ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन, मतलब हम ऊपर नीचे करते हैं इक्वेशंस, it doesn't matter unless and until we are not committing any mistake in signs. मतलब जो साइन होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो हम चेंजेस करते हैं, तो अगर हम वो साइंस प्रॉपरली देते हैं, सो वी विल कमिट लेस मिस्टेक्स. ओके, सो देखिए इस तरीके से मतलब हमें y इज इक्वल्स टू -1 मिलता है. वेरीफाई दैट 2 minus 1 satisfies the second equation. It will obviously satisfy, right? अगर 2 into 2 is 4 plus 3 into -1 is -3, so 4 minus 3 is 1. So second equation is satisfied. Similarly, अभी देखिए हमें यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल 2 दिया है. सो व्हाट इज दैट? 3x minus 4y minus 15 is equals to 0 and y plus x plus 2 is equals to 0. So even if this equation looks a bit complicated, it is not. Let me tell you how. क्योंकि सेकंड इक्वेशन में हमें x और y के ऑर्डर चेंज करके दिए. सो y पहले दिया है, x बाद में दिया है, राइट? सो वी कैन इंटरचेंज दैट. सो यू कैन सी हियर इन द स्टेप 2. ओके, सो दीज इक्वेशंस हैव बीन नाउ करेक्टेड. एंड क्या करना है? जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, 4x plus 4y is equals to -8. Then we will be having 7x is equals to 7 and x is equals to 1. Okay, so substituting x is equals to 1 in the equation 2, x plus y is equals to -2 and y is equals to -3 है. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो यू गेट दिस मेथड. ये मेथड आपको समझ में आया? किस किस को डाउट है स्टूडेंट्स? यस, ओके, आई लाइक दीज काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस. ओके, सो अभी देखो इस इक्वेशन में एक एग्जांपल सेकंड में हमने क्या किया है कि y को एलिमिनेट किया है. एलिमिनेट करना आप समझते हो कि मतलब उसे रिमूव कर देना. सो अगर मुझे x को रिमूव करना है, सो क्या करना पड़ेगा? इफ आई हैव टू रिमूव x और इफ आई हैव टू एलिमिनेट x, सो इन दैट केस मुझे 4 की जगह पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप एक ट्राई कीजिए, ये जो एक्टिविटी है ये आप ट्राई कर सकते हैं घर पर. क्या करना है? सेम इक्वेशंस लेने हैं लेकिन हमें सिर्फ प्रोसेस चेंज करनी है. इंस्टेड ऑफ 4 वी विल मल्टीप्लाई विथ 3. मतलब जो सेकंड इक्वेशन है ना हमारा, हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा हमारा सेकंड इक्वेशन? 3x plus 3y is equals to -6, राइट? सो अभी 3x और 3x है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हम ऐड नहीं करेंगे. जिस तरीके से यहाँ पे ऐड किया है ना, वी कैन नॉट ऐड दैट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज वी हैव टू
eliminate x. So इस तरीके से accordingly you can make changes. मतलब ऐसा नहीं है कि जो किताब में एग्जैक्ट दिया है वही अगर आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा या फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, यू कैन मेक लिटिल बिट चेंजेस, कुछ मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं. ओके. ओके, सो डन विद दैट. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. So this would be our last topic for today, and so I'm so sorry, students, because I'm facing a bit issues because of electricity. There's outage of electricity, and that's why we will be like keeping our class for 30 minutes only. Is that okay, students? Is that okay? If it is okay, uh, can can I get confirmations from you? Okay, fine, thanks. ठीक है, चलो. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है स्टूडेंट्स? देखो, अभी कोई कोई एग्जांपल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें एलिमिनेट करना पॉसिबल तो होता है, लेकिन इट इज अ बिट डिफिकल्ट. मतलब हमें वो जो हमारे व्हाट वी से जो एलिमेंट्स है वो हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं. ओके, सो इन दैट केस वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास सिमिलरली दो एग्जाम्पल्स रहेंगे या फिर दो इक्वेशंस रहेंगे. सो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो कैसे करते हैं? देखो, अभी पहला एग्जांपल ही मैं ले लेता हूँ. सॉल्व 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11. दिस इज फर्स्ट. सेकंड वन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन इक्वेशन 2 इट इज इजी टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. मतलब क्या? देखो, ये दो लाइंस देखो. जो सेकंड इक्वेशन हमने लिया यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको यहाँ पे लेके हमने क्या किया? y को राइट साइड में भेजा और 2 को लेफ्ट साइड में ले लिया. सो नाउ इट बिकेम 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई. ओके, सो ये हो गया. तो इसमें हमें एक y की वैल्यू मिल गई. अभी जो ये y की वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ y. 3x माइनस 2 इज वैल्यू ऑफ y. सो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे. सी, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 इन इक्वेशन 1. तो इस तरीके से हमें आगे जाके सॉल्व करना होता है. We will see that equation in details maybe in the next class. Okay, so let me just check who has joined. Vinith, you are a bit late, I think. Okay, you are not a bit late, you are too late because we are about to wrap up the class. Okay, so students, it is 7:29 or it is almost 7:30. So I think we should wrap up the class. Sorry for the inconvenience causing to you, but please bear with us. Okay. So thank you, students. We'll see you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Bye. You can leave the class, students. Bye.